To fall on the moon, and I did several times, is to rediscover childhood. और मून पे चलते हुए ये काफ़ी दफ़ा गिरा भी, बिकॉज ही इज़ नॉट यूज टू मॉकिंग ऑन द मून, और ग्रेविटी नहीं है उस तरह जैसे अर्थ पे होती है. यू हैव टू यूज़ योर फोर्स टू वॉक एंड यूज़ योर फोर्स टू स्टॉप. You go down in slow motion, the impact is slight, the risk of injury virtually nil. और गिरने से उस तरह फोर्सफुली नहीं गिरते बिकॉज ग्रेविटी नहीं है. हल्का सा गिरने और चोट लगने का रिस्क बहुत कम है. Forsaking the adult attitude that regards a fall not only as a loss of dignity but also a source of broken bones, the moonwalker like a child accept it as yet another diversion. और कोई बड़ा एडल्ट हो वो तो गिरने को एक सिंबल ऑफ लॉस ऑफ डिग्निटी लेगा, और इट कैन बी अ सोर्स ऑफ ब्रोकन बोन्स. लेकिन जो मून वॉकर है वो गिरने को जस्ट लाइक अ चाइल्ड एक्सेप्ट करता है. ये एक और उसकी साइड है मून वॉकिंग की कि यू हैव टू फॉल. Only the clinging moon dust, the untoward demand on oxygen supply occasioned by the exertion of getting up, pall the pleasure of a tumble. सिर्फ गिरने से जो मुश्किल होती है वो ये है कि मून डस्ट कपड़ों पे लग जाती है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हिंडर होती है. अदरवाइज देयर इज़ नो यू कैन से लॉस ऑफ डिग्निटी इन फॉलिंग ऑन द मून. Personally, I find the 1/6 gravity of the moon more enjoyable than the soothing weightlessness of space. Space भी तो बिल्कुल weightlessness थी, बिल्कुल gravity नहीं थी. Things fly up in space. लेकिन यहाँ पे जो 1/6 gravity है उसको ये enjoy कर रहा है. I have the same sense of buoyancy, but the moon provides a reassuringly fixed sense of up and down. Moon is providing him an assuring sense of up and down, that you are not going to fly up, ऊपर नहीं चले जाएंगे, you will stay near the moon with an up and down movement. As we unload and begin to assemble our equipment, including the battery-powered four-wheeled rover that will carry us across the moonscape at a jaunty 6 miles or an hour, I gaze around all the plains and mountains that have become our world. Now they are assembling their equipment. उनके पास एक बैटरी से चलने वाला 4-wheeled rover है, छोटी सी गाड़ी है जो बैटरी से चलेगी और उनको मून के गिर्द जो है they will be traveling moonscape को जाके डिस्कवर करेंगे उसमें बैठ के. सो एंड देन ही गेज अपॉन द प्लेन्स एंड माउंटेन्स जो अब उनका वर्ल्ड है. ही इज़ लुकिंग एट द प्लेन एरिया एंड द माउंटेनियस एरिया. माई आइज ट्रेज अ क्यूरियसली कॉन्टूर टोटली एलियन वेस्टलैंड. सो हीज आइज आर लुकिंग एट अ डिफरेंट कलर जो है वो टोटली डिफरेंट कलर है, एलियन वेस्टलैंड है. Scan the lofty mountains, lofty or high, feel a strange, indescribable emotion, and then he's feeling very different kind of emotions which cannot be described. No naked eye has ever seen them, no foot has ever trod them. I am an intruder in an eternal wilderness. So he's saying कि किसी आँख ने इनको नहीं देखा कभी ज़मीन को जहाँ ये उतरे हैं. They are the first one to land on Mare Imbrium, and no foot has trod over here, and he is an intruder in this. Intruder is बगैर बुलाया, बिन बुलाया person, someone who is interfering. The flowing moonscape, unmarred by single jagged peak, reminds me of Earth's uplands covered by a heavy blanket of fresh snow. So जो mountain का moonscape है जो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई उसकी पीक्स वो रिमाइंड कर रही हैं उसको अर्थ के माउंटेनियस एरिया की जिनकी पीक्स जो हैं वो स्नो कवर्ड हैं. And then indeed the dark grey moon dust, its consistency seems to be somewhere between coal dust and talcum powder. और जो मून की डस्ट है उसका डार्क ग्रे कलर ऐसे लग रहा है जैसे कोल डस्ट और talcum पाउडर को मिक्स करें तो वो एक कलर बन जाएगा. इट्स अ डार्क ग्रे कलर, अ मिक्सचर ऑफ talcum पाउडर एंड कलर मिक्सचर कर दें अगर talcum पाउडर का और कोल डस्ट का तो वी विल गेट द कलर ऑफ द सैंड ऑफ द लूनर सैंड. Mantles virtually every physical feature of the lunar surface. और ये जो डार्क ग्रे मून डस्ट है ये हर चीज़ को कवर कर रही है मून के ऊपर. द माउंटेन्स, द होल्स एंड एवरीथिंग, द प्लेन एरिया. Our boots sink gently into it as we walk. We leave sharply chiseled footprints. और मून डस्ट जो है उसके उनके बूट्स जो हैं उसमें सिंक कर रहे हैं और जब वो चल रहे हैं तो उनको उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो इतने शार्प लग रहे हैं जैसे किसी स्पेशली चिजल से
चिज़ल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, अ शार्प एज्ड कटर से काटे हुए हों फुटप्रिंट्स, इस तरह के फुटप्रिंट्स वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपने. कलर अंडरगोज एन ऑड ट्रांसफॉर्मेशन है, कलर जो है वो एक चेंज अंडरगो करता है यहाँ पे. एवरीथिंग अंडर फुट और नियर बाय इज़ ग्रे, और जो भी चीज़ इन्हें नज़र आ रही है अपने पाँव के नीचे वो सारी चीज़ें ग्रे हैं. This hue blends gradually into the uniform golden tan that characterizes distant objects. लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो गोल्डन टैन सा कलर उनका नज़र आ रहा है. स्मॉल स्पेक्ट्रम एंड दिस स्मॉल स्पेक्ट्रम मूव्स विद द वॉकर, और ये जो है ये लाइन कलर रेंज जो है ये वॉकर के साथ, मून वॉकर के साथ मूव करता है. गोल्डन टिंज जो है वो भी दूर दूर जाके गोल्डन टिंज भी नज़र आ रही है. मोस्ट ऑफ द स्कैटर्ड रॉक्स शेयर द सेम ग्रे टिंट एज द डस्ट. ज़्यादातर जो यहाँ पे रॉक्स हैं उनका भी कलर वही है जो मून लूनर डस्ट का कलर है, ग्रे कलर है. एंड बट वी फाइंड टू दैट आर जेट ब्लैक, लेकिन ऐसे पत्थर भी मिले जो बिल्कुल ब्लैक कलर के थे. 2 पत्थर ऐसे मिले जो पेस्टल ग्रीन कलर के थे. सेवरल विद स्पार्कलिंग क्रिस्टल्स, क्रिस्टल लाइक पत्थर उनको मिले हैं. सम कोटेड विद ग्लास, और ऐसे लग रहे थे जैसे ग्लास के बने हुए पत्थर भी हों. एंड वन दैट इज़ वाइट. सो दीज आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ रॉक्स दैट आर फाउंड ऑन द मून. एज वी एडवांस वी आर सराउंडेड बाय स्टिलनेस, नो विंड ब्लोज. बिल्कुल कोई हवा नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कोई वेदर चेंज नहीं है. एवरीथिंग इज़ सो स्टिल, और कोई आवाज़ भी नहीं है, नो साउंड. Only shadows move within the spacesuit. I hear the reassuring purr of the miniaturized machines that supply vital oxygen and shield me from the blistering 150-degree surface heat of lunar morning. So he's hearing the reassuring voice of these small machines which they have with them. Reassuring तसल्ली देने की वाली आवाज़ that you are not alone. These machines are there with they are your support. और वो इनको हीट से भी प्रोटेक्ट कर रही हैं. Any of 1,000 malfunctions in a space suit or the alarm could condemn an astronaut to swift death. Now this is a great risk कि कुछ ख़राबी हो जाए लूनर मॉड्यूल में, यानी स्पेस क्राफ्ट में या स्पेस सूट के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो एस्ट्रोनॉट तो फ़ौरन मर सकता है. Yet we have a quiet confidence in our own abilities and boundless faith in the engineers and technicians who have fashioned ingenious devices that transport and sustain us in space. So अपने American engineers and technicians को appreciate कर रहे हैं कि they work very honestly and they astronauts have a faith in them कि इनके जो बनाए हुए ट्रांसपोर्ट है, के बनाए हुए जो ये सूट्स हैं, space suits, they will help them sustain in space, survive in space. Often in the course of my stay on the moon, I recall the words of American poet Edwin Markham. There is a destiny which makes us brothers. None goes his way alone. मीन्स कि हम सारों को कोई ना कोई चीज़ जोड़े रखती है. हम में से कोई भी अकेला कहीं नहीं जा रहा होता. We are linked with each other. At first we experience a troubling deception with perception. और शुरू में एक मुश्किल लगती है perception की. perception is to understanding, distance की understanding भी, ये चीज़ों की understanding को समझना चीज़ों को वो मुश्किल लग रहा है मून पे. because there are no familiar measuring sticks or like in our native planet. trees नहीं हैं, telephone poles नहीं हैं, clouds नहीं हैं, haze नहीं है जिनसे वो determine कर सकें कि कोई object आपके करीब है या दूर है. so distance को measure करना एक problem है. in this paragraph he's talking about the problem of deception of perception. and deceive कर रही है perception आपको. gradually our eyes learn to cope with the craters are you can say holes, cavities on the surface of the moon. कि gradually उनकी eyes को पता चल गया है कि कहाँ कहाँ खड्डे हैं. are they mammoth, बहुत बड़े हैं, medium हैं, या minuscule हैं, या बहुत छोटे हैं. सो ये साइज़ भी समझना और डिस्टेंस समझना मून पे मुश्किल हो रहा है. दैट डॉट वर्चुअली इवन इंच ऑफ द सरफेस, और वो जो डॉट लग रहा है वो असल में 1 इंच ऑफ द सरफेस है. एंड ग्रेजुअली द मून बिकम्स अ फ्रेंडलियर प्लेस. अ थॉट occurred to me, would human beings born on moon be able to find their way among the trees and clouds of earth? and now this thought has occurred to him कि क्या अगर मून पे भी लोग पैदा होंगे तो क्या वो भी अपना रास्ता अर्थ तक ढूंढ लेंगे.